हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज संध्यार किसी ब्रेकिंग अपडेट मु आपण मानक पई नहीं आछि। तो जानिथिबे एबे समस्त जिले रे जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पाई जोरदार प्रस्तुति चली यार भितर किसी जिले में आपणकर डीएलटीसी बसी सारी आज किसी जिले में आपणकर डीएलटीसी बसी तो ताकू नहीं गुड न्यूज आसी सहित इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पाई जो मैंने एप्लाय करते जो मानकर मेडिकल है नथिला से पाई मध्य चिठी आसी मेडिकल बोर्ड बसवा नहीं ताकू आलोचना करवा ता सहित आजिकार गोटे बड़ अपडेट जोड़े कि ब्रेकिंग चिठी कही पारे जो आपण जानिथिबे प्रति वर्ष स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी जो करितांती से बाबद लेटर आसी आपण माने 31 जनवरी 2026 सुधा समस्त स्कूल एसडीपी करने लेटरटी आसी देखा ता सहित आसंता काली गोटे गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बसवाक जाउची एवं आशा रही प्राथमिक शिक्षक मान गुड न्यूज को नहीं ता सहित आपणकर नुआ सेसन रु अर्थात एप्रिल मासरू आपण माने नुआ बहिरे पिला पाठ पढ़ाइबे से आरंभ हो जाइए ट्रेनिंग 5 दिनिया ट्रेनिंग पाई असेपारु चिठी आसी ता सहित गतकाली निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन रो प्रतिष्ठा दिवस जाइए एवं से प्रतिष्ठा दिवस रे कौन बार्ता आसी आलोचना करवा तेणु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु भिडियोटी देख सारा पर भिडियोटी पसंद आसिले भिडियोटी हृदय लाइक कर दिंतु ता सहित आपणकर सांगसाथी मान भिडियोटी व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखरे आसुथिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि यही लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई पारिबे। डेरी न करी चलंतु आजिकार जो ब्रेकिंग अपडेट रही ताकू जानि नबा। तो देखंतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस 1/1/2026 रे लेटर कर देछि समस्त स्कूल माननकू एसडीपी करने असेपा तरफ जो 24/12/2025 रे लेटर आसता से लेटर टी छड़ा जाइए जो प्रिपेरेसन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड कमेंसमेंट ऑफ प्लानिंग कमिटी मीटिंग बाबद आरटी एक्ट 2009 Chapter 4 अनुजाई all school management committee SMC are mandated to prepare a school development plan जो SDP at the school level रे तो सेतिपाई in view of the above planning process of 2026-27 required to be need based prioritized and prepared strictly in a decentralized manner and during preparation of the plan the following points आपनकर consider करिवे जेमिति कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लानिंग टीम्स एट स्कूल अर्थात एसडीपी अर्थात जो प्लानिंग टीम फास्ट गठन करेंगे ता सहित कैपेसिटी बिल्डिंग मीटिंग रखिए प्लानिंग टीम मान सहित स्कूल रे जमीती आपणकर कौन कौन प्लानिंग करेंगे स्कूल लेवल प्लानिंग कमिटी जो स्कूल लेवल से कौ माने रहिबे ना से एसएमसी रहिबे एवं स्कूल टीचर्स रहिबे ऑल गवर्नमेंट स्कूल शिशु वाटिकार द्वादश पर्यंत समस्ते तांकर स्कूल लेवल रे एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करेंगे एसडीपी फॉर्मेट जोड़ा कि ऑलरेडी पठा जाइए से फॉर्मेट टी देखी तार एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रिपेरेसन ऑफ एसडीपी एंड प्लानिंग टीम मीटिंग्स जो रही इंक्लूडिंग ट्रेनिंग रिव्यू ओरिएंटेशन फील्ड विजिट्स एंड प्रिंटिंग जो रही आपंकर MMER ग्रांट अंडर समग्र शिक्षा माध्यम भरण कर तेणु प्लानिंग प्रोसेस 2026-27 जो रही आपंकर नीड बेस्ट रही प्रायोरिटाइज दि जाऊँगी एंड प्रिपेयर करेंगे स्ट्रिक्टली डिसेंट्रलाइज्ड मैनर प्लानिंग प्रोसेस जो रही से आपंकर समग्र शिक्षा रही PM जनमन DA जोगु एंड PM श्री कथा लिखा जाइए जो स्कीम आसूँ जोड़ा कि कलेक्टर आपंकर अप्रूव कर प्लानिंग रे रखिबे गैप एनालिसिस जो रही डिटेल्स आपनकर एथिरे जेमति कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन कथा कहतु बा प्री प्राइमरी शिशु बाटिका कथा कहतु बैरियर फ्री एक्सेस कथा कहतु आउ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एसएमसी मीटिंग ए सबू आपनकर एसडीपी रे मेंशन करिवे तेणु आपनकर जो स्कूल प्लानिंग टीम फॉर्मेशन एंड मीटिंग जो रही एग्जीक्यूट करिवे एसएमसी बा एसएमडीसी मेंबर जो रही एंड टीचर्स जोड़ा कि बाय जनवरी 31 2026 सुधा समस्त स्कूल रे ताकू जो एसडीपी करेंगे तेणु एसडीपी रो फॉर्मेट रही मुझे देखे दूची आपन को
ଇଏ ରହିଛି SDP 2025-26ର ସେଇଭଳି 26-27ର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯଦି ଜାଣୁନଥିବେ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 9ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 5:30ରେ ବସିବ। ଖବର ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର 7ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏହା ଭିତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଭଳି କେତେକ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ହୁଏତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରେ। ଅସେବା ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଟର ହେଇଛି 5 days ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ NEP 2020କୁ ବେସ୍ କରି ନ୍ୟୁଲି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଫର୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିଚର, ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନର ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ହେବ ଇଚ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟ୍ରେନିଂ। ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ବ୍ଲକ ଲେଭେଲକୁ ଦିଆଯିବ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅସେପାକୁ 5 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ RP ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବହିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଗତକାଲି ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନର 81ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୂଳ ଦାବି ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ଲେଭେଲ୍ 9 ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ବେତନ 35,400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ, ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ପତ୍ରନାମା ବାହାର କରିବା, 2001 ମସିହାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 2017, 22 ଓ 23 ଓ 25 ମସିହାରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ମହାଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଜପତି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 11ଟା ବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମିଟି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ DO ଗଜପତିରୁ ଲେଟର ହେଇଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜି 10:30ରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।